Okay, so let us start with the new module, that is the third module, design of retaining wall. So can you tell me, have you come across this topic in the previous semesters, retaining wall, regarding Geotechnical engineering. geotechnical engineering, right? So I think you have already studied this topic in geotechnical engineering. So what is a retaining wall? Can anyone tell me? The wall that resists the moment, that resists the mud flow, sliding, etc. Okay, so basically it's a wall that retains a material on the other side. Okay, so because of that material, the forces are developed in the wall. Okay, so the basic purpose of the retaining wall is to retain any material on the other side. Okay, so let me share Yes, my sir. screen. Okay, so basics, I think everyone is aware of this. So this is something new for you, we have not seen in TRCS. Okay, so but ultimately the design is similar to the design which we have seen, like the design of the slab. So yes, let us start with this topic, design of retaining wall. Okay, so what is a retaining wall? A retaining wall or retaining structure is used for maintaining the ground surfaces at different elevations on either side of it. Okay, so the basic purpose of a retaining wall is to maintain the ground surface at different elevations on either side of the retaining wall. Okay, so in bridge work, the wing walls and the abutments are designed as retaining walls. So in bridge, we have seen there is a abutment, the first pier that is called as a abutment, and the wing wall. These are used to retain the material or the soil. So in bridge work, these are designed as a retaining wall. And the material retained is called as the backfill. ठीक है, जो मटेरियल रिटेन हो रहा है उसको बोलेंगे backfill. Basically the soil is called as the backfill, and the position of the backfill lying above the horizontal plane at elevation of the top of the wall is called as the surcharge. ठीक है, so soil के ऊपर जो भी है loading etc, so that will come under the surcharge at the top of the wall basically. So now the plastic state of stress was investigated by Rankine in 1860. So in geotechnical, you must have already studied the properties, the Rankine's theory. So basically the design of the retaining wall is also based on Rankine's theory. So the equations which are derived, the formulas which are used are basically on the basis of Rankine's theory. Okay, so let us see the various types of the retaining wall. Okay, does anyone remember the various types of retaining wall? Okay, types of retaining walls, have you seen or studied? Don't remember. Don't remember. Okay, so let us see the various types of retaining wall. So classified according to the mode of resisting earth pressure and according to their shape, they are classified as, first one is the gravity wall, second is cantilever retaining wall, and then counterfort retaining wall, and then buttressed walls. Okay, so these are the various types of the retaining wall. As far as your syllabus is concerned, we are going to design a cantilever retaining wall and a counterfort retaining wall. Okay, so basically in your syllabus, these two types are included, and we are going to study the design of cantilever and counterfort retaining wall. So let us see what exactly these types are. So let us try to understand in the figure. So first one is the gravity wall. Okay, so the gravity wall is basically a wall, okay, which retains the material just on the basis of the gravity, okay, or the self weight of the wall. Okay, so that is nothing but your gravity wall. So this is the cross section. So this portion is called as the toe. This is the backfill. ये जो portion है
ये backfill है or the soil. ठीक है, so this portion is the backfill or the soil. So here you can see, and this is called as the heel and this is called as the toe. This is the ground surface. ठीक है, ground surface horizontal से जो भी angle पे रहेगा, that is called as the angle of the inclination. This is the basic type, the gravity retaining wall, and then we have cantilever retaining wall. ठीक है, so this is the most important type, cantilever retaining wall, which we are going to study the design of. So here you can see the various terms in the cross section of a cantilever retaining wall. So this is called as the stem of the retaining wall. AB is called as the stem. This DB is called as the toe of the retaining wall, and this portion BC is called as the heel slab of the retaining wall. Toe slab, heel slab, and the stem. Okay, so these are the components of a retaining wall. So the various types you can, this is called as the T-shaped cantilever retaining wall. This is an L-shaped cantilever retaining wall, and this is called as the inverse L-shaped cantilever retaining wall. So basically we are going to study the design of a typical T-shaped cantilever. The most typical shape is the T-shaped cantilever retaining wall, which is widely used. Okay, so these were the various types of the retaining wall. And one more thing, one more type is the buttressed cantilever, buttressed retaining wall. Okay, so this wall is used in the olden days. ठीक है, सो बेसिकली बट्रेस मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ काउंटर फोर्ट. ठीक है, एक सपोर्ट दिया रहेगा यहाँ पे, ये जो वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा तो उसको बोलते हैं बट्रेस. ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट रहेगा इसको, सो दैट इज नथिंग बट योर बट्रेस्ड वॉल्स. तो ये जो सपोर्ट है इसको बोलते हैं बट्रेस. So this were used in the olden days. So these are the various types of the retaining wall. Okay. So now let us see what is active earth pressure or Rankine's theory. Okay, since I told you the equations are derived on the basis of the Rankine's theory, the assumptions are based on the Rankine's theory. So first we should understand, we should know what is the Rankine's theory. So let us see, Rankine's theory of lateral earth pressure is applied to uniform cohesionless soil only. Okay, so this theory is applied to uniform cohesionless soil only. Okay, does anyone remember what is cohesionless and cohesive soil? Okay, geotech part is coming here. Anyone? What are cohesive soils and cohesionless soils? याद है किसी को? No cohesion between soil molecules. Okay, for example, can you give any example? Shorabji? Sand. Correct. Okay, so I hope everyone is aware of what is cohesive and cohesionless soil. So I have mentioned here. So cohesive is nothing but clay or stilty clay, sticky soil which can hold water is cohesive, and cohesionless is sand or gravel. Okay, strength depends upon the friction between the particles. So these are the cohesive and the cohesionless type of soil. So this theory is based on the cohesionless soils only. Later, cohesive soil was also included in this theory. So now let us understand what are the assumptions of Rankine's theory. So the first assumption is the soil mass is semi-infinite, homogeneous, dry, and cohesionless. Okay, so the first assumption of Rankine's theory is the soil mass is semi-infinite. Okay, what do you mean by semi-infinite? Semi-infinite means the depth of the soil is finite, but area is infinite. Okay, so that is called as semi-infinite. And what is homogeneous? Homogeneous means it is same throughout, dry, and cohesionless. So we have already seen what is cohesionless. So this was the first assumption. Now the second assumption is the ground surface is plane. Okay, so which may be horizontal or inclined. So the second assumption of Rankine's theory is the ground surface is plane. And the third assumption is the back of the wall is vertical and smooth. ठीक है, जो retaining wall का back है
दैट शुड बी वर्टिकल एंड स्मूथ, मतलब जो कॉन्टैक्ट में है सॉइल से, ओके तो उसमें फ्रिक्शन बेसिकली वी आर नॉट कंसिडरिंग, इट इज कंसिडर्ड एज स्मूथ. And the fourth assumption is the wall yields about the base and satisfies the deformation condition. So when there is a pressure coming from the soil, the wall will yield from the base. Okay, so the wall will basically deform from the base as the support. So these are the assumptions of Rankine's theory. So based on these assumptions, we are going to study the design. So now let us see the various cases of cohesionless backfill which are considered. So the first case is when the soil is dry or moist backfill with no surcharge, with no external load. The second case is submerged backfill, okay, so which is submerged. And the third is backfill with uniform surcharge, ठीक है, backfill with ऊपर से कुछ extra load भी है. And then backfill with sloping surface. Okay, so these are the various cases for which the cohesionless backfill is considered. ठीक है, ये सब cases हो सकते हैं whenever we are going to design a retaining wall. Okay, so I hope this is clear. The various cases dry या moist हो सकता है, submerged भी हो सकता है, या फिर ऊपर से load है जो backfill है उस पे, वैसा भी हो सकता है, और वो sloping भी backfill हो सकता है. ठीक है, so these are the various cases. So now let us understand, whenever we design a retaining wall, we have to do particular checks. Okay, so that is the same for every structural element. We have to perform certain checks. Then only we can say that the design is safe. So here let us see what are the various checks that we perform in the design of a retaining wall. So the following are the modes of failure of a retaining wall. Okay, so retaining wall कैसे कैसे fail हो सकता है? So either it can fail by overturning, or it can fail by sliding, or it can fail by the pressure of the soil, or it can fail by bending. So these are the various modes of a failure of a retaining wall. So whenever we design the retaining wall, we will have to check for overturning, check for sliding, and check for soil pressure, and check for bending also. Okay, so now let us understand what are the various forces acting on a retaining wall. So consider the cross section here of a retaining wall, typical cantilever retaining wall. So I've just shown the various components of the forces acting on the retaining wall. So the forces acting on the retaining wall. So this is the stem. So the components is already clear. So this is called as AB is called as a stem. So let us say W1 is the weight of the stem AB, and let W2 be the weight of the base slab. ठीक है, पूरा base slab को toe and heel both together considered as the base slab. So let us say W2 is the weight of that, and W3 is the weight of the soil. And what is PA? PA is the earth pressure. Okay, so this is the lateral earth pressure diagram, which is maximum at the base. As the height increases, it reduces. Okay, so a lateral earth pressure का pressure diagram. And then x, ठीक है, x is considered, it is the distance of the CG from the toe. ठीक है, कोई भी component we are considering weight, उसका distance from the toe we are considering. Okay, so toe means from D. So x bar is the distance when we are considering W1. So x bar is from the toe. When we are considering W2, x is from the toe. And P2, what is P1 and P2? These are the intensity of the soil pressure at the toe and at the heel respectively. Okay, so bottom से भी soil pressure आएगा और side से भी soil pressure आएगा. ठीक है, so these are the various forces acting on a retaining wall. ठीक है, so I hope this is clear so far. So far, is this clear, everyone? Whatever we have seen. So this Yes, is sir. okay, fine. Okay, so these are the basics, the theory part which you should know before actually solving the numericals. Okay, fine. So now let us understand the design principle. ठीक है, तो डिजाइन कैसे करेंगे अभी रिटेनिंग वॉल. ठीक है, अ न्यू स्ट्रक्चर वी आर लर्निंग हाउ टू डिजाइन. सो कैसे डिजाइन करेंगे, लेट अस सी द डिजाइन प्रिंसिपल्स.
ठीक है, सो के इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. ठीक है, so it is the coefficient of active earth pressure. We will see the various terms. So now let us understand the design principle. So the design of a cantilever retaining wall consists of the following. ठीक है, तो जब भी मैं मुझे डिजाइन करना है रिटेनिंग वॉल, तो क्या क्या डिजाइन करना है. द फर्स्ट इज वी हैव टू एक्चुअली डिसाइड द डायमेंशंस ऑफ द रिटेनिंग वॉल. ठीक है, बेसिक्स डिजाइन मतलब क्या, डायमेंशंस एंड रीइंफोर्समेंट. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक यू शुड नो. व्हेन वी आर डिजाइनिंग एनीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस और रीइंफोर्समेंट. सो इसमें फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फिक्स द बेस विड्थ बी. ठीक है, बेस का जो विड्थ है वो कितना रखना है वो डिसाइड करेंगे. Then basically we will decide the dimensions of the retaining wall. Then what we will do, we will design the stem. ठीक है, तो stem को डिजाइन करेंगे. फिर उसके बाद we will design the heel slab and then we will design the toe slab. ठीक है, so once you do all this thing your retaining wall design is ready. ठीक है, is this clear? तो basically dimensions, फिर डिजाइन करेंगे और चेक तो by default whenever you design you will have to check for certain criteria. So now let us understand the design principle. ठीक है, so now you should be able to understand this. The retaining wall, whenever it is subjected to the backfill pressure, so how it is going to behave. ठीक है, how it is going to bend. This is the most important thing which you should understand before designing. ठीक है, so whenever the retaining wall जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो स्टेम कैसे बेंड होगा. ठीक है, so I have shown with the dotted lines. So this stem will try to bend like this. Okay, and ये जो है हील पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे भी सॉइल है तो यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर है, तो ये हील कैसे बेंड होगा, दिस विल बेंड लाइक दिस. ओके, एंड दिस विल बेंड लाइक दिस द टो पोर्शन. ठीक है, यहाँ पे भी सर्टेन डेप्थ का सॉइल रहेगा. ठीक है, तो ये ओपन तो नहीं रहेगा, यहाँ पे सर्टेन डेप्थ सॉइल भी यहाँ पे भी रहेगा. लेट अस से इतना डेप्थ. Okay, so this is the behavior, typical behavior of a cantilever retaining wall when it is subjected to the backfill pressure. ठीक है, so this is the bending of a retaining wall. ठीक है, so this is important, it might be asked as a theory question. The behavior of a retaining wall when it is subjected to the backfill pressure, so how it is going to behave. So based on this, जो भी है अपना design principle is dependent on this. ठीक है, so once you understood कि कैसे behave करेगा under loading, then we can provide the reinforcement. ठीक है, तो अभी now try to understand the second figure. yes, ठीक है, heel मतलब बैकफिल के साइड का. ठीक है, तो यू कंसिडर योर लेग. ठीक है, जो तुम्हारा फुट है उसको कंसिडर करो, तो सामने के पोर्शन को क्या बोलेंगे, टो, और पीछे के पोर्शन को क्या बोलेंगे, हील. ठीक है, तो वैसा तुम लोग याद रख सकते हो. तो ये सामने का पोर्शन है, ऐसा ऐसा कंसिडर करो ये डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये सामने का पोर्शन है, सो दिस इज द टो. ये पीछे का पोर्शन है, सो दिस इज द हील. ओके फाइन. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस द रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड. ठीक है, अभी देखो अगर ये स्टेम ऐसा बेंड हो रहा है तो टेंशन किधर डेवलप हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी. व्हेन द स्टेम इज बेंडिंग लाइक दिस, वेयर इज द टेंशन डेवलप्ड. टेंशन इज डेवलप्ड ऑन द हिल साइड. आदित्य इज सेइंग ऑन द स्टेम. हाँ, स्टेम जब भी बेंड हो रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन से फेस पे टेंशन डेवलप हो रहा है. ओके, राइट साइड. जैनब इज सेइंग राइट साइड, बैकफिल साइड. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो ये जब स्टेम, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन जो मैंने पूछा क्वेश्चन. जब ये स्टेम ऐसा बेंड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा बेंड हो रहा है ना, तो टेंशन किधर डेवलप हो रहा है, इधर. ठीक है, सो दैट इज द रीजन टेंशन साइड में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, ये जो रीइंफोर्समेंट दिख रहा है मैंने प्रोवाइड किया है. सो ये टेंशन साइड पे मैंने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया. अभी मुझे बताओ
हील स्लैब में टेंशन किधर डेवलप हो रहा है? हील स्लैब में बॉटम में टेंशन डेवलप हो रहा है या टॉप में? टॉप, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, टॉप में टेंशन डेवलप हो रहा है, सो दैट इज द रीजन स्टील देखो मैंने किधर प्रोवाइड किया है, स्टील इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि जहां पे टेंशन है तो वहां पे स्टील प्रोवाइड करना है। नाउ टेल मी, टो स्लैब में किधर टेंशन डेवलप हो रहा है? बॉटम में, करेक्ट। ठीक है, तो मैंने स्टील किधर प्रोवाइड किया है देखो, बॉटम में। So this is the basic concept of a design of a retaining wall. You should understand the deformation and reinforcement किधर provide करना है। ठीक है, I hope this is clear to everyone now. Okay, Yes, sir. okay. So now let us move on. Okay, now let us see the equations which are involved. Okay, so let us see what is gamma is nothing but the unit weight of soil. Ka क्या है? It is the coefficient of active earth pressure. And what is Pa? Pa is the pressure which is active earth pressure, which is given by Ka into gamma into H. And what is phi? Phi is nothing but the angle of shearing resistance or angle of internal friction. ठीक है, so phi is angle of, okay, so your phi is nothing but the angle of shearing resistance or angle of internal friction. So these are the equations which you have already seen in your geotech engineering. ठीक है, so whenever we decide the dimensions of the retaining wall, at that time we decide the dimensions of the toe also and the heel slab also. ठीक है, so generally where there is a backfill, ठीक है, वहां पे तुम्हारा जो toe slab है उसका लेंथ is always more than the, सॉरी, heel slab का जो लेंथ है वो ज्यादा ही रहेगा तुम्हारे toe slab से। ओके, ठीक है, सो पी ए इज नथिंग बट एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पी ए, ठीक है, ये स्मॉल पी लिखा है मैंने, और कैपिटल पी क्या है? टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर इन किलो न्यूटन। ठीक है, सो दिस यू ऑलरेडी नो, टोटल किलो न्यूटन में कैसे मिलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज गिवन बाय के इंटू गामा इंटू एच। ठीक है, बेस प्रेशर किससे मिलता है? के इंटू गामा इंटू एच, और टोटल हाइट है कैपिटल एच, सो दिस, एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड concrete. Okay, so this was the basics of the design of a retaining wall. So in this we will see cantilever में भी दो types we will see, एक तो with surcharge और एक without surcharge। ठीक है, तो with surcharge मैंने बोला ऊपर से backfill पे अगर external load है, so that is considered as the surcharge. So वो एक different case है, एक तो normal case without any surcharge, and the second is with surcharge and with backfill with sloping surface। ठीक है, so basically these are the various types of the problems that can be asked. So we will see each type of the problem when we do the numericals. Okay, so before actually doing the numerical, let us just go through the various types। ठीक है, backfill with uniform surcharge और backfill with sloping surface। ठीक है, तो ये इसमें क्या difference है? Let us just go through that and then we can actually start with the numericals। ठीक है, so let us see backfill with uniform surcharge, additional load or the external load। ठीक है, सो कंसिडर दिस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है, सो व्हाट वी हैव टू कंसिडर दिस एक्सटर्नल लोड आल्सो। ठीक है, अगर सिर्फ बैकफिल रहेगा तो सिर्फ के इंटू गामा इंटू एच रहेगा प्रेशर एट द बॉटम बेस पे, करेक्ट। लेकिन अब ये एक्सटर्नल लोड को भी इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो हाउ आर वी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट? ठीक है, पहले इधर मैंने इनकॉर्पोरेट किया एक्सटर्नल लोड के इंटू डब्ल्यू, बट व्हेन वी आर डूइंग दिस, ठीक है, लेकिन इससे एनालिसिस कैसे करेंगे? ठीक है, ये मेरा डायग्राम तो बन गया, एक्सटर्नल लोड की वजह से भी मेरा प्रेशर बढ़ गया, लेकिन हाउ आर वी गोइंग टू डू द एनालिसिस विद दिस डायग्राम? कैन वी
proceed? No, we cannot. ठीक है, for doing the analysis calculation part we need a diagram something like this. ठीक है, लीनियर होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है. ठीक है, तो वो कैसे किया है? ठीक है, सो दिस पोर्शन वी हैव इनकॉर्पोरेटेड हियर एंड वी हैव बेसिकली इंक्रीज्ड द हाइट ऑफ द प्रेशर डायग्राम. ठीक है, ये जो प्रेशर है तो उसको इधर इनकॉर्पोरेट करके इसको क्या किया है, देखो पहले इतना ही था हाइट, तो ये हाइट बढ़ा दिया है. ठीक है, तो that is how, for convenience, for the analysis purpose and for the calculation purpose, so this we have done. And what is that? At the base of the wall pressure intensity is given by this k into gamma into h पहले वाला, और जो external w के लिए k into w. But for the analysis purpose we want diagram like this. So उसके लिए क्या किया, the height of the fill is equivalent to uniform surcharge intensity and it is given by the relation k into gamma h e into k into w. ठीक है, सो ये रिलेशन से वी गॉट द वैल्यू ऑफ एच ई, जो एडिशनल हाइट जो चाहिए, दिस इज गिवन बाय डब्ल्यू अपॉन गामा. ठीक है, सो वेन एवर the question is asked with uniform surcharge, so the pressure diagram we will draw like this with the additional height he is given by w upon gamma, where w is the surcharge load. Okay, is this clear everyone? Yes. ओके ठीक है, तो बेसिकली तुमको इतना ही याद रखना है कि वेन एवर सरचार्ज इज गिवन वी विल डू द एनालिसिस लाइक दिस. एक्सटर्नल एडिशनल हाइट एच ई कैसे आया, सिर्फ मैंने उतना बताया, डब्ल्यू अपॉन गामा. ठीक है, वन मोर केस इज रिमेनिंग, दैट इज बैकफिल विथ स्लोपिंग सरफेस. ठीक है, तो वेन एवर वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट एक normal type without any surcharge we will do, then with surcharge we will do, and one problem with sloping surface also will do. So now let us see backfill with sloping surface है तो कैसे करेंगे. ठीक है, so here you can see ये जो surface है ये with an angle with the horizontal है, so that is called as the sloping surface basically, and that angle is nothing but beta, which is called as the surcharge angle. ठीक है, तो ये केस में जो तुम्हारा प्रेशर डायग्राम है वो भी ऐसे ही बनेगा. ठीक है, विथ पैरेलल टू दिस एंगल. ठीक है, ये जो प्रेशर है ऐसे ही रहेगा. सो नाउ इन दिस के ए इज गिवन बाय दिस इक्वेशन विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन जियोटेक. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, तुमको रिजॉल्व करना है. ठीक है, ये इंक्लाइंड है तो रिजॉल्व करना तो वी ऑलरेडी नो. सो दिस इज बीटा, सो दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज साइन बीटा. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है स्लोपिंग बैकफिल में, जैसे नॉर्मली हम लोग डिजाइन करेंगे सेम ही करना है, बस यहाँ पे कंपोनेंट्स लेना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल यू विल अंडरस्टैंड दिस, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड basics के what is the difference, just to show you the difference I'm showing this to you. ठीक है, so total active earth pressure is given by half into k into gamma into h square. And then last is the shear key. ठीक है, shear key is nothing but the key which is provided at the bottom of the base slab. ठीक है, to actually avoid the friction और sliding. ठीक है, sliding avoid करने के लिए एक basically key दिया है, उसको बोलते हैं shear key. So if the wall is unsafe against sliding, shear key below the base should be provided. ठीक है, अगर स्लाइडिंग में वो सेफ नहीं आ रहा है तो एक shear की हम लोग बेस पे प्रोवाइड करेंगे. So it develops passive pressure which resists completely the sliding tendency of the wall. ठीक है, तो ये जो shear की है वो किधर प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, एट द बेस. ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे राइट एट द बॉटम ऑफ द स्टेम अगर मैंने ये प्रोवाइड किया तो ये है मेरा shear की. ठीक है, तो ये कभी प्रोवाइड करेंगे जब ये स्लाइडिंग में फेल होगा रिटेनिंग वॉल, एट दैट टाइम वी विल प्रोवाइड द shear की. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.
हाँ, तो पहले चेक करेंगे स्लाइडिंग में अगर फेल नहीं सॉरी पास नहीं हो रहा है, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस वी विल एट द एंड वी विल राइट के वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द शेयर की। ठीक है, तो बेसिकली डिजाइन पूरा करना है। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी कि ये जो डिजाइन है इट इज सिमिलर टू विच डिजाइन, विच स्ट्रक्चरल मेंबर जो हमने पहले किया है? कॉलम। कॉलम। यस, एनीवन एल्स? सॉरी सॉरी, फुटिंग फुटिंग। फुटिंग। एनीवन एल्स? स्लैब ना? बेसिकली तुम तो स्लैब ही डिजाइन कर रहे हो ना, आर यू गेटिंग? अभी ये तो मैंने सिर्फ यस सर। क्रॉस सेक्शन दिखाया तुमको, अभी अलोंग द लेंथ देखो ना, तो वो तो स्लैब ही हो जाएगा। तो जो भी प्रिंसिपल है वो स्लैब डिजाइन ही रहेगा अपना। स्टेयरकेस में भी ऐसे ही था ना, बेसिकली स्लैब डिजाइन ही कर रहे थे। तो ये भी क्या है, बेस स्लैब, अभी मैंने बताया ये पूरा बेस स्लैब हो गया। तो ये बेस स्लैब डिजाइन करेंगे। ये तुम्हारा स्टेम क्या है, स्टेम भी एक स्लैब ही है, तो उसको भी एज अ स्लैब डिजाइन करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, कॉलम क्या होता है? कॉलम कंप्रेशन मेंबर होता है ना। अभी ये कैसा है, ये पूरा एक लंबा जैसे स्लैब है और उस पे तुम्हारा लोड आ रहा है। आर यू गेटिंग? ठीक है, सो ठीक है, इसके बाद काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, सो दैट वी विल सी आफ्टर द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, सो you can see the images of this buttress wall. ठीक है, if you just google it, so you can, okay, so let me show some of the images of this cantilever retaining wall. ठीक है, so you will understand. ठीक है, so buttress wall देखो, ये जो है इसको बोलते हैं बट्रेस। ठीक है, सो नाउ डेज ये इतना टिपिकल कॉमन नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आरसीसी कैंटिलीवर वॉल ही वी नॉर्मली डिज़ाइन, एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अगर ज़्यादा हाइट ज़्यादा है देन वी गो फॉर अ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, सो हियर यू कैन सी ये बैकफिल है, ये हील है, ये की दिख रहा है, तो ठीक है, स्टेम को इधर बैटर बोला है इन्होंने। सो यू कैन जस्ट चेक वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है, टिपिकल स्टोन रिटेनिंग वॉल। ठीक है, जो नाउ वट एवर वी आर डूइंग आरसीसी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो बेसिकली वी आर डिजाइनिंग द री एनफोर्समेंट एवरीथिंग।